અતુલભાઈ, અતુલભાઈ 6:30 થયા છે, તમે શરૂ કરી શકો. હા, ચોક્કસ. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ઉત્કલ ફેડરેશન, કર્ણાટક ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના આજના પ્રવચન દિવ્ય બીજનું પોષણના વક્તા સ્મિત પ્રજ્ઞાન, વરુણ આર, સ્વસ્તિશિખા મોહપાત્રા તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત અર્ચનાબેન મુનશી કરાવશે અને આજની સભાની શરૂઆત આપણે વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી હું કરાવી રહ્યો છું. પહેલા હું બોલીશ, પછી આપ એને રિપીટ કરશો. ઓ હિડન લાઈફ વાઇબ્રન્ટ ઇન એવરી એટમ. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. Know he is also one with every other. No, he is also one with every other. શાંતિ શાંતિ. આજની સભાની આગળની કાર્ય માટે હું શ્રી અર્ચનાબેનને આમંત્રિત કરું છું. અર્ચનાબેન, આપનું સ્વાગત છે. धन्यवाद अतुल भाई. आज की सभा शुरू करते हुए आज सभी को चैत्री नवरात्रि की शुभकामनाएं, भोगादि की शुभकामनाएं, गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं. और आज एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे तो है, मगर एक और महत्वपूर्ण दिवस इसलिए हो रहा है कि आज यहाँ त्रिवेणी की मीटिंग में हमारे साथ 3 वक्ता जो जुड़ रहे हैं वो YIT के युवा वक्ता हैं, जो इस बार पहली बार त्रिवेणी के साथ जुड़ रहे हैं और उसके साथ ही हमारा नई श्रृंखला शुरू हो रही है. तो आप सबों का स्वागत है आज की ये सभा के लिए. आज का विषय है नर्चरिंग द डिवाइन सीड. इसके पहले वक्ता हैं स्मितप्रज्ञा पात्रो. उनका संक्षिप्त में परिचय दे दूं तो स्मितप्रज्ञा जी, स्मितप्रज्ञा पात्रो जी, आप पाइथागोरस यूथ लॉज और UTF के सदस्य हैं. आप 17 साल की उम्र में थियोसॉफी के संपर्क में आए. आप 2006 से TS में शामिल हुए हैं. आपने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अपना बीटेक पूरा किया है. आप हैदराबाद में BPL मेडिकल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में एक वरिष्ठ उत्पादक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं. आप YIT की कोर टीम की सदस्य हैं. तो स्मित प्रज्ञा जी, आपका स्वागत है. आपका विषय आप अपनी अंग्रेजी भाषा में बोलिएगा. आपका स्वागत. Thank you for the introduction. So, stay to everyone. And as we all know that our topic today is nurturing the divine seed. So, let's start. Think of a seed as a tiny package holding the potential of a new plant, like a sleeping baby plant wrapped in protection. But before it sprouts, it enters dormancy, a deep sleep waiting for the perfect conditions to begin its journey. Why dormancy? It's nature's way of ensuring survival. In simple terms, seed dormancy is like a deep sleep for seeds, ensuring they wake up and start growing into plants when the time is just right. It's nature's way of giving them the best chance of survival and success. When conditions align, germination occurs. The seed absorbs water, triggering enzymes to kickstart growth. And then the magic unfolds.
The seed sprouts for anchorage and shoots upwards towards the light, growing into a new plant. This a seed gets nurtured by the nature. Now, what is this divine seed? You may wonder. It is the essence of God, the Atma, which is the reflection of the Paramatman, residing within our very being, just as a tiny seed holds the potential to grow into a magnificent tree. So too does this divine seed carry the power of the entire cosmos within it. The divine seed is the essence of the whole existence, waiting patiently for the right moment to sprout and flourish. Just like a seed lies dormant until it finds the perfect condition for growth, so too does the divine essence within us remain latent until we provide it with the nurturing environment it deserves. Just as loving parents nurture their children, guiding them with wisdom and compassion, so too must we nurture the divine seed within us. As the parents brought their child up with loving, caring surrounding. Let's take some example. We learned from our parents in the childhood that sharing is caring. Why? To teach us generosity. They taught us to love the animals, isn't it? Love and what is compassion. Whenever any guests were coming to our home, they used to give us gifts, remember? And we used to be very happy to receive the gifts. And our mother asks us to thank them for the gifts. Why? To teach us gratitude. Now, you must be thinking that why I'm saying this? Because it was how our parents nurtured us by giving us suitable environment. This video. In that video, a little boy was at the supermarket with his mother. Suddenly, the boy called out to his mother and told, "Mom, look at her." African lady. The mother was so embarrassed, thinking that what if the boy says something inappropriate that would offend the lady? And the lady was embarrassed, thinking that the boy might be pointing out her color. And both the ladies were so embarrassed that they couldn't make eye contact. The boy continued, "Look, Mom, how beautiful she is." Then a big smile appears on the face of the lady, and the mother's eyes filled with pride. And the caption was, "Imagine you raised your kid like this." So the purpose to narrate this story is to understand that nurturing is necessary. This is how the parents nurture their children. But is it limited to that? Don't you think it's the environment for the soul for its growth? This is how the divine seed gets nurtured. And we must cultivate a nurturing environment filled with love, compassion, kindness, and generosity. And just as a child learns from its elders, so too must we seek guidance from those who can lead us on the path of righteousness. A question comes, if the parents nurture the child for him to grow into a perfect human, if it is so important, then the child whose parents die just after the birth of the child, what about him? How he could get nurtured? The children don't have parents, do they not grow? Are we real? Or we are just mediums? Think about it. We might be thinking that we are nurturing the child because he is our child. But
we should remember that child came through the parent, not from the. So we all came from the Paramatma, not from any human. Nature knows how to nurture everything and every being that belongs to it. So everything in this whole existence gets nurtured by the nature itself in different ways. We are just mediums. Nature always protects and guides us in every point of our life. It nurtures the plants, the animals, the human beings, though we don't realize it. We don't understand laws of nature, so we blame others for the suffering and misery in our life. When we see the suffering of the world, when we see the innocent man gets punished for the deeds of someone else, when we see an old man abandoned by his own children, child lost his parents, parents lost their children, we feel everything is random. We blame God that He created this world and forgot. Consider the tender gaze of a mother as her child takes their first steps. She allows them to stumble and learn, yet her loving attention remains unwavering, ready to offer support or guidance at a moment's notice. Similarly, God permits us to venture forth into the complexities of life, embracing our journey of self discovery. Whether we find ourselves amidst joy or sorrow, success or failure, His presence is steadfast. Laws of karma, laws of reincarnation are God's way of nurturing the whole existence. It's necessary for a child to hold the hand of his parents to learn walking, but to start running, he must leave the hand of the parent. Likewise, for us to run, God has given us free will so that we can distinguish between right and wrong and act accordingly. To think before acting and learn from our mistakes, because laws of karma teaches us what is wrong and what is right. We gain experiences by taking birth in different circumstances as a result of our past decisions and actions. And this is how we grow, we evolve, we making mistakes and learning from them, and because of which we gain experience. We know that we are the undetached spark of the universal divine flame, the spark, or you can say the divine seed of the potentiality waiting to be awakened. This divine seed represents our connection to the infinite, inherent capacity for growth, and our journey towards self-realization. Realization that I am that. Aham Brahmasmi. I am that Brahman. A long time ago, in a village in India, there lived a boy named Shvetaketu, the son of a wise man named Udalak. When the boy reached the age of 12, Udalak sent his son to study the wisdom books from the great masters. When he reached the age of 24, after studying all the Vedas, the erudite Shvetaketu returned home. But Udalak perceived a disturbing change in him. The young man now believed that he knew everything. One day, Udalak asked his son to accompany him to the family garden. In it grew an old and leafy banyan tree, which had given shades to his father, great grandfather, and who knows how many more ancestors. Shvetaketu, my son, said Udalak,
taking the young man under the shade of the old tree. I wonder if you have really learned the teachings of the Vedas. Can you hear what cannot be heard with ear? Can you see what cannot be seen through the eyes? Do you confused? His teachers had told him about this. What, dear father, explain please. As you wish, my son, the father replied. Bring me a banyan fruit. Shwetaketu went to a low branch and took a ripe fig. Here you are, father. Open it, Udalak said. Tell me, what do you see inside? I see many seeds, Shwetaketu replied. Open the seed, Shwetaketu, said the father, and tell me what you see. I see nothing at all, replied the young man. My son, that nothing is the subtle essence of all living beings. It seems as nothing because you cannot perceive it. But out of that nothing emerged this magnificent old tree. That nothingness, my son, that invisible essence, Udalak continued, is the spirit of the entire universe, the self of all that exists, the ocean of pure consciousness. That is the truth. That is the reality. That is the self. Out of that you emerged, just like the banyan tree emerged from the and with a slight murmur, Udalak added, Tattvamasi, you are that Shrutakatu. The seed in itself is a microcosm. We know that. Yatha pinde tatha brahmandi. We heard this, right? From the Upanishads, I quote, as the human body, so is the cosmic body. As is the, so is the cosmic mind. As is the microcosm, so is the macrocosm. As is the atom, so is the universe. Picture a lotus seed resting at the bottom of a murky pond. It's like our untapped spiritual potential patiently waiting amid life's challenges. Suddenly, a ray of sunlight breaks through, stirring the seed. Much like a profound insight can awaken us on our spiritual path. As the seed sprouts, it reaches upward, breaking through the darkness. Similarly, our newfound purpose guides us towards spiritual truth. With time and care, the shoot strengthens, emerging above the water, mirroring our growth in compassion and inner peace. Finally, the lotus blooms, symbolizing enlightenment, just as the flower's beauty uplifts the pond. Our transformed presence inspires those around us. Now the question arises, if the divine seed or the essence of the whole existence is within me and I am nurturing it, then who am I? And if I am the reflection of that Paramatman, then it's the higher self which is nurturing the lower self. It's the nurtures itself for its growth. We know that we are the manifested form of the eternal boundless Paramatman. Our journey starts from the mineral kingdom. For this, I quote, God sleeps in mineral, dreams in vegetable, wakes to consciousness in animal, to self-consciousness in man, to divine consciousness in the man made perfect. I am here.
So we have the divine power within us, and which means the real instruments to work through which we should work and use the instruments in our journey to the absolute. But due to the long association and wrong identification, means long association with the bodies and wrongly identifying the bodies as our true self, we suffer in this material world. Our lower self has selfish emotions and selfish thoughts, because of which we create karma and trapped in the cycle of cause and effect. Once upon a time, before Earth existed, there was a meeting among the gods and the asuras. They wanted to create a new planet and put a special species called humans on it. But they couldn't agree on who should be in charge of the humans. The gods said they should because they were kind and wise. The asuras argued they were strong and they should lead. They argued and argued until it turned into a big fight. They blamed each other for being selfish and mean. It seemed like they would never agree on who should be the leader of humanity. Then Tridev stepped in. They decided that neither the gods nor the asuras would rule over. Instead, humans would have something special. That is free will. Free will meant that humans put their Ji, own paths. Yes? last 2 minutes to wind up first. Yes. Choose their own paths and decide their own futures. It would be up to them whether they followed the gods or the asuras. Their actions and thoughts would decide who would have control over them, devas or asuras. This story teaches us that our choices are what decide our future. It reminds us that with freedom comes responsibility, and the choices we make shape our destiny. Every man is his own absolute lawgiver, dispenser of glory and bloom to himself, decreer of his life, his reward, and his punishment. This is the first eternal truth. Our action and intention decides our growth on the spiritual path. We as souls came from the divine and we will return. Thank you. थैंक यू वेरी मच स्मिता प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने समय की मर्यादा में अपना पार्ट 1 खत्म किया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ वरुण जी को, वरुण रामकृष्ण जी का। उनका पहले से संक्षिप्त में थोड़ा सा परिचय। नमस्ते वरुण रामकृष्ण जी, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर हैं। आपको ऑटोमोटिव उद्योग में 14 से ज्यादा वर्ष का अनुभव है। आपके परिवार द्वारा आपका थियोसॉफी से परिचय हुआ है। शुरुआत में आपके दादा दादी जो सदस्य थे उनसे आपको ये मिला, विरासत में मिला है। बेंगलोर सिटी लॉज में पिछले 8 वर्षों से विविध गतिविधियों में आप सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। आपने वर्ष 2018, 19, 22 और 23 में अड्यार में आयोजित युवा सम्मेलन में विविध विषयों पर प्रस्तुति की है। आपने टीओएस बेंगलोर के कोषाध्यक्ष की भूमिका भी निभाई है और टीओएस की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग भी लिया है। तो वरुण जी, आपका स्वागत है। आप कन्नडा में स्मिता प्रज्ञा जी का व्याख्यान कहें। आपके पास 10 मिनट। वेलकम। थैंक यू अर्चना जी फॉर द इंट्रोडक्शन। सबको गुड़ी पड़वा और युगादि का शुभकामनाएं बेंगलोर कर्नाटक फेडरेशन की तरफ से। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಜೀವನದ ಪೋಷಣೆ.
ಏನಿದೆ ದೈವಿಕ ಜೀವನ, ಇದರ ಪೋಷಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೂ ಮಾನವನಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಮಾನವನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೋಷಣೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದೇನು, ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಬೀಜ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಬೀಜ ಅನ್ನೋದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹೂತಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮರುದಿನನೇ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಅದು ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು 2 ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು, 1 ವಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು 1 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಬೀಜದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪೋಷಣೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಿಯಮ ಇದೆ, ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೋಷಣೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಅದು ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಎಂಟೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕೋ, ಆ ಪೋಷಣೆ ಬೇಕೋ, ಆ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಪೋಷಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋವರೆಗೂ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಈ ಬೀಜವನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯದೆ ಈ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ನಿಯಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಯತ್ಪಿಂಡೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೆ ಅಂತೀವಿ, ಯತ್ಪಿಂಡೆ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲದರ ಇಂತ ಇರುವ theosophy ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಜವಾಗಿ ತಿಳಿದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಈ ಬೀಜದ ದ್ವಾರ, ಈ ಬೀಜ ಹೇಗೆ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ಕೊಡುವವರೆಗೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೋಷಣೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೆಳೆದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮದ ವಿಕಾಸ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ದೈವಿಕ ಬೀಜದ ಪೋಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಆತ್ಮದ ಪೋಷಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಗುಣಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅದರ ಪೋಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅದರ ಪೋಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಆ ಪೋಷಣೆ ಅನ್ನೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಸೇರಿದಾಗ ಆ ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಿಸ್ತೀವೋ ಅದು ಆ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಗಳು ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ, ಲವ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯತೆ, ಮಾನವೀಯತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಗುಣಗಳು, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಗುಣಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಸಿಕ್ಕದಂಗೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ. ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದರೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದರ ಪೋಷಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋದು
ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಅವನ ಆತ್ಮದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇ ಸ್ಮಿತಾಪ್ರಜ್ಞ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಖನಿಜ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಮಾನವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಖನಿಜ ವರ್ಗ ಅಂತಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದ ನಂತರ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವನಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಆ ದೈವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಥವಾ ದೈವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಮಾನವನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಲತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅವನ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು, ಅವನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಖನಿಜ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾನವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಹೇಗೆ ಮಾನವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಶ್ವೇತಕೇತು ಮತ್ತು ಉದಾಲಕ ಅಂತ. ಶ್ವೇತಕೇತು ಅನ್ನೋನು ಉದಾಲಕ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬನ ಮಗ. ಅವನು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷ ಕಳಿತಾನೆ. 10-12 ವರ್ಷ ಕಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅವನ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಮನೆಗ್ ಬಂದಾಗ ಅವನೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವರ ತಂದೆ, ಉದಾಲಕ ಅನ್ನೋ ತಂದೆ Varunji, last 2 minutes please. Yeah. For your part. ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಯಾಕೋ ಸರಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಅವರ ಒಂದು ತೋಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮರದ ಒಂದು ಬೀಜ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮರದ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೀಜಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಬೀಜನ ತೆಗೆದು ನೋಡು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಬೀಜನ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಥಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯತೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಸತ್ಯ, ಅದೇ ಈ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೀಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇರುವ ಕಾರಣ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಹೀಗೆ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ ಕಾಣದೇ ಇರೋಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಅಥವಾ ಕೇಳದೆ ಇರೋಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದೇನು ಕಾಣದೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಜಾಗ, ಆ ಒಂದು ನಥಿಂಗ್ನೆಸ್, ಆ ಶೂನ್ಯತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದನೇ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ ಅದೇ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಅದೇ ನಿಯಮಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. थैंक यू वरुण जी, ऑन टाइम आपने आपका कन्नड़ा में ट्रांसलेशन प्रस्तुत किया. स्वस्तिशिखा जी, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो, यू आर स्पॉटलाइटेड. ये हमारी पहली बार स्वस्तिशिखा हमारे साथ ज्वाइन हो रही है त्रिवेणी में. आपका बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम स्वस्तिशिखा. इनका छोटा सा संक्षिप्त में परिचय दे दूं. स्वस्तिशिखा महापात्रा जी ये भी YIT से ही हैं और उनका छोटा सा परिचय ये है कि स्वस्तिशिखा महापात्रा जी, आपने NIIT राजस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और बैंकिंग और वित्त में स्नातकोत्तर यानी मास्टर्स किया है. आप 2009 में थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हुई हैं. आप पाइथागोरस यूथ लॉज उत्कल थियोसॉफिकल फेडरेशन की सदस्य हैं. आप मितालिनी महापात्रा जी और प्रदीप महापात्रा जी के व्यवहारिक जीवन और सोच से बहुत प्रेरित हैं.
और थियोसॉफी में बहुत इंटरेस्ट रखती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। द यंगेस्ट वक्ता अपने यहाँ का। आप अपना व्याख्यान हिंदी में 10 मिनट में पार्ट 1 करिएगा। वेलकम। नमस्कार सबको, गुड़ी पाड़वा और उगादि का हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन। धन्यवाद मेरा छोटा सा परिचय के लिए। तो आज का दिन ऐसा है कि हम लोग जैसे कि न्यू ईयर मानते हैं, नववर्ष मानते हैं, तो आज के दिन में हम ऐसा मान सकते हैं कि हम जो संकल्प कर लेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, मतलब वो हम पालन भी कर पाएंगे। तो आज के दिन पे जो ये हमारा टॉपिक है, नर्चरिंग द डिवाइन सीड, अर्थात जो दैवी शक्ति संपन्न बीज है उसका पोषण कैसे करेंगे उसके बारे में हम आलोचना करेंगे। तो इसका संक्षिप्त में मैं डिस्कशन करती हूँ और समराइज करती हूँ। तो पहले हम लोग समझते हैं कि बीज क्या है। जैसे हम देखते हैं एक बीज, एक छोटा सा बीज दिखता है, बहुत छोटा दिखता है, और उसको देख के हमको कभी ये पता ही नहीं चलता कि ये बीज कभी कल जाके इतनी बड़ी पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी छाया, जिसके फल, जिसके फूल या वो हमको बहुत सारा हमारा हेल्प कर पाएगा। तो जब हम वो पेड़ को देखते हैं तब हमको ये समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा पेड़ इतनी छोटी सी बीज से बना हुआ है। तो ये और एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है, तो वो छोटा बच्चा जब छोटा रहता है वो खाली सोया ही रहता है, उसको कुछ, हमको लगता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो सोया हुआ है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो बड़ा होता जाता है, फिर वो क्राउलिंग करने लगता है, फिर चलने लगता है, फिर धीरे धीरे भागने लगता है और एक मैच्योर्ड इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हमको पता नहीं चलता, और समय के साथ अप्रोप्रिएट सिचुएशन में, वो अप्रोप्रिएट स्टेज में वो उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो वैसे ही जो बीज है उसका जब वो कैसे अंकुरित होता है, उसको जब सही लाइट में, सनलाइट मिलता है, सूरज का जो किरण है वो मिलती है, जो पानी है वो प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर क्वांटिटी में मिलता है, फिर उसको उसका पोषण मिलता है, तभी अंकुरित हो जाता है। और अंकुरित होके वो छोटे से बीज एक बड़ा पेड़ में परिवर्तित हो जाता है, और वो सबका हेल्प में हेल्प कर लेता है, सेल्फलेस भी वो हेल्प कर पाता है। तो ये तो है हमारा जो फिजिकली हमारे आंखों में जो दिखता है, जैसे हम देख पाते हैं कि नेचर की मदद से या किसी के मदद से कैसे फिजिकली, या फिर बच्चे के केस अगर हम स्टडी करें तो मेंटली या इमोशनल कैसे डेवलपमेंट होता है। लेकिन उसका क्या, जिसको हम देख नहीं पाते, जिसको हम देख नहीं पाते उसको, और हमारी इंसान की सोच से भी वो बहुत ऊपर है। तो इसको हम लोग एक, जैसे कि एक सिंबलाइज किए हैं, डिवाइन सीड। डिवाइन सीड मतलब दैवीय शक्ति संपन्न जो बीज है, ऐसा ऐसा मतलब जो हमारे अंदर है। तो इसका कैसे हम नर्चर करेंगे, इसको कैसे हम पोषण देंगे, इसको हम कैसे अनफोल्ड करेंगे, क्या इसका नर्चर करना जरूरी है, या फिर ये कौन सी स्टेज में है जो हमारा डेवलपमेंट है, हम कौन से डेवलपमेंट के स्टेज में है, और क्या हम उसको समझ पाए हैं, क्या हम अनफोल्ड कर पाए हैं, या हम कुछ अनफोल्ड कर चुके हैं। तो ये बहुत सारा सवाल आता है, और जिसके बारे में स्मिता प्रज्ञा जी ने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, तो उसको मैं थोड़ा सा समराइज करती हूँ। तो यहाँ पे ये डिस्कशन करते टाइम उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, छोटा सा, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये। जैसे हम हमारे पेरेंट्स की एग्जाम्पल दी थी। सारे पेरेंट्स जो भी है वो बच्चे को सिखाते हैं कैसे डिसिप्लिन रहना है, कैसे दूसरों को थैंक यू कहना है, मतलब हम आभारी हैं कि आपने मुझे कुछ दिया, मुझे अच्छा लगा, तो हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। या फिर कैसे हम दूसरे को प्यार करते हैं, कोई पशु हो या कोई पंछी हो या किसी को कैसे प्यार किया जाए, वो हम लोग सीखते हैं। तो हमारे अंदर कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, विजडम, ये सब डेवलपमेंट होता है, हमारा माइंड का डेवलपमेंट होता है। तो हम लोग अगर सही खाना खाते हैं तो हमारा शरीर का डेवलपमेंट होता है। तो ये हमारे पेरेंट्स ने हमको बचपन में सिखाते हैं कैसे एनवायरनमेंट के साथ कैसे हमको डेवलप होना है। तो यहाँ पे जो बताया गया है सिर्फ पेरेंट्स एक माध्यम है। पेरेंट्स के जैसे कि नेचर किसी ना किसी के द्वारा, किसी ना किसी के माध्यम से वो
हम लोगों को सिखा देती है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई पेरेंट्स के माध्यम से हो, चाहे टीचर के माध्यम से हो। स्कूल में हम लोगों को मोरल नैतिकता के बारे में सिखाती है, या पेरेंट्स के माध्यम से हो, या कोई भी मीडियम कोई भी हो, लेकिन हम लोगों को वो शिक्षा मिल जाती है। खाली हम लोगों को नहीं, एनिमल्स को भी मिलती है, प्लांट्स को भी मिलती है, सबको ये शिक्षा मिल जाती है। तो इसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि कैसे छोटी सी बच्ची, एक छोटा सा लड़का एक मॉल में अपनी मम्मी के साथ जाता है, तो मम्मी को देख के वो बोलता है, एक अफ्रीकन लेडी को देख के वो बोलता है, देखिए उसको देखने के लिए बोलता है। तो उनकी मदर पहले उनको बुरा लगता है, वो थोड़ा सा एम्बेरस हो जाती है कि शायद कुछ बोल देगा बच्चा, क्योंकि वो भी बच्चा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, शायद कुछ गलत बोल देगा बच्ची के बारे में और उनको बुरा लग जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो डिस्क्राइब करता है कि वो लड़की बहुत ही सुंदर है, मतलब चाहे वो ब्लैक हो या कुछ भी हो, अपार्ट फ्रॉम दैट उसको लगता है कि ये बहुत सुंदर है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये वो बच्ची के और उनके आंखों में वो जो खुशी है, या उनके चेहरे पे जो वो स्माइल है, वो ले आती है। तो इसको देख के मतलब समझ में आता है कि मतलब ये हम भी ऐसे डिस्कशन करते हैं हमारी लाइफ में, या हमारे चारों तरफ हमें डिस्कशन करते हैं कि कैसे उसका संस्कार उसको अच्छा मिला है, उनके पेरेंट्स से उनको अच्छा शिक्षा मिली है, तभी जाके वो ऐसे बात कर पाता है। तो यहाँ पे तो इसका कहने का, ये स्टोरी कहने का मतलब ये था कि जो नर्चर करना, चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो या आध्यात्मिक हो, ये जरूरी रहता है, क्योंकि ये हम लोगों को एक सर्टन लेवल पे, एक सर्टन स्थिति पे पहुंचाती है। हम लोगों को जो बेसिक, हमारा जो बेसिक स्ट्रॉन्ग, मतलब बेसिक को हमारा ये एक ग्रोथ देता है, तभी जाके हम आगे बढ़ पाते हैं, हम जिंदगी में आगे जा पा रहे हैं। ये एक गाइडेंस जैसा हमारे लिए काम करता है। तो यहाँ पे आगे ये बताया गया है कि नेचर को हमेशा सबको प्रोटेक्ट करना पता है, अपने चाहे वो उसकी जितनी भी क्रिएशंस है उसको प्रोटेक्ट करना पता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग हो, कैसे प्रोटेक्ट करना उसको पता है। लेकिन कभी कभी हम ये समझ नहीं पाते हैं, हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, हम परिस्थिति को ब्लेम करते हैं, हम भगवान को ब्लेम करते हैं, हम इसको उसको ब्लेम करते रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता। इसके इसके लिए हम दुखी भी, अंदर से खुद को भी दुखी करते हैं और बाहर भी अपने चारों तरफ सबको दुखी करते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जो सफरिंग के लिए हम लोग दूसरे को ब्लेम करते हैं, या हम बोलते हैं उसकी वजह से मुझे, मेरा तो कोई दोष नहीं है, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, मेरे साथ मेरा सब ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो तो बाहर ही है, मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे उसकी वजह से सफरिंग होती है, मुझे इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये यहाँ पे बोलते हैं कि हमको उस चीज की समझ नहीं है, या फिर अगर समझ है तो थियोरिटिकल समझ है, हमने कभी उसके बारे में सोचा नहीं, या फिर उसके बारे में हमने अपनी सेल्फ इंक्वायरी नहीं किया। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा हो या रीइंकार्नेशन हो, जब हम ये समझ पाएंगे, तब ये हम ये भी समझ पाएंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम से, जो सफरिंग से, इसके लिए सिर्फ हम ही रिस्पॉन्सिबल है, ना कि कोई बाहर वाला या भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं। और हमको भगवान ने फ्री विल दिया हुआ है, जो फ्री विल के वजह से हम लोग आगे जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ मिस्टेक की, हमको पता नहीं था, तो ये हम सीख सकते हैं और सीख के आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि दोबारा ये मिस्टेक ना हो। अगर बार बार मिस्टेक होता है तो ये मिस्टेक नहीं है। तो अगर एक बार मिस्टेक, एक बार के बाद वो हमको समझ में आता है कि हाँ ये मेरी गलती है, आगे जाके मैं ये नहीं करूंगी, तो हमको वहां से सीख मिलती है और हमारा डेवलपमेंट होता है। जैसे कहा गया है ना, सोल अपना डेवलपमेंट के लिए बार बार रीइंकार्नेशन लेती है, बार बार पुनर्जन्म होता है, और बार बार यहाँ पे हम लोग सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, अनुभव लेते लेते फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी के माध्यम से समझाया गया है। स्टोरी ऐसा स्टोरी है कि बहुत पुराने टाइम पे भारत के एक गांव में एक श्वेतकेतु के नाम से एक लड़का रहता था। तो उनके जो वो एक बहुत बड़ी विज्ञ व्यक्ति के पुत्र थे, जिनका नाम था उदालक। तो उदालक
जब 12 साल के थे कृतकेतु, तब अदालत ने उनको हायर स्टडीज के लिए व पढ़ाई के लिए अथवा पढ़ाई के लिए उनको बाहर भेजना चाहा। तो वो बड़े बड़े ज्ञानी मास्टर्स के पास भेजे थे, तो वहां से पढ़ाई खत्म करके 26 साल की उम्र में, स्वस्तिशिखा जी, लास्ट 2 minutes प्लीज। या ओके, 26 साल की उम्र में वो वापस उनके गांव में आए। तो जब वो गांव में आए थे तब वो सारे वेदों में पारंगम थे, उनके पास सारी शिक्षा थी। तो उनके मन में, उनके व्यवहार में थोड़ी सी परिवर्तन और थोड़ा सा चेंजेस उनके पिता ने लक्ष्य किया था। तो ये एक बार ये लक्ष्य करते हुए एक बार अदालत ने उनके पुत्र को अपनी साथ में, फैमिली, उनका जो गार्डन था वहां पे लेके गए। तो वहां पे लेके गए, वहां से एक बड़ा सा बनियन का पेड़ था। तो उसके से वो जो बनियन पेड़ बहुत पुराना था, जो उनके पिता और पिता के पिता उनको उनको तक वो छांव देता था। तो उनके पिता ने पूछा, आप इतने आपके पास शिक्षा है, तो क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं? क्या आप वो सुन सकते हैं जो कानों से सुना नहीं जा सकता? क्या आप वो देख सकते हैं जो आंखों से देखा नहीं जा सकता? क्या आप वो मतलब क्या आप वो सोच सकते हैं जो माइंड के बियॉन्ड है, माइंड के बाहर है? तो कृत्य को थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गए। वो बोले, ऐसा तो मैंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, कोई स्क्रिप्चर्स में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा, ऐसा क्या है? तो उनके पिता ने उनको एक बनियन फ्रूट लाने के लिए, फल लाने के लिए बोला, और उसको तोड़ने के लिए बोला। तो तोड़ा तो उसके अंदर में बहुत सारे बीज थे। तो उनके पिता ने पूछा, आप क्या देख पा रहे हो? तो बोले कि मैं बीज देख रहा हूँ, बहुत सारे बीज है। तो एक बीज को जब ओपन किया तो पूछे, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो वो बोले कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो वो बोले कि जो नथिंग है, जो कुछ भी नहीं है, उसके अंदर सब कुछ बसता है। जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कुछ नहीं है, जिसका कुछ भी हमको दिखाई नहीं देता, जब हमारे आंखों से जो कुछ नहीं है उसके अंदर ही सब कुछ है, लेकिन वो हमको समझ में नहीं। अ, तो हम लोगों को तो यहाँ पे एक और स्टोरी था, जिसमें कैसे हमारे पास कैसे विजडम है, कैसे हमारे पास खुद को अनफोल्ड करने के फ्री विल है, उसके बारे में भी एक स्टोरी था। जब असुर और देवता के बीच में ये डिस्कशन चल रहा था कि इंसान को कौन कंट्रोल करेगा, तभी त्रिदेव ने बोला था कि इंसान के पास फ्री विल है, तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का ये तात्पर्य है, हम लोगों के पास जो फ्री विल है, उसकी वजह से हम अपना मार्ग, अपना रास्ता खुद बना सकते हैं, और अपना रास्ते में हम जा सकते हैं, अपना कर्म खुद क्रिएट कर सकते हैं। Thank you, Swastishika, you finished it on time. Now, may I request Smita Pragya ji, आपका part 2 आप शुरू करें इंग्लिश में। So we discussed this, that our action and intention decides our growth on the spiritual path. We as souls came from the divine and we will return to him. The soul comes down, takes birth in different forms, gains experience, and through learnings and experiences, it evolves. It's the process, because the process of evolution is the foundation of this whole existence. We are here to experience life taking birth in different circumstances. As the soul evolves, consciousness expands, and the soul explores and understands its real identity and its power by reaching the Buddhic consciousness. And to face our prarabdha, the soul reincarnates by taking different physical bodies. We learn from our mistakes, we grow by correcting those mistakes. Life is like a big adventure.
and our souls are the explorers. Along the way, we make mistakes and learn from them. It's like learning to ride a bike. You fall, but then you get back up and try again. Sometimes, when things get tough, we look for happiness outside ourselves, like searching for treasure in far away places. But the real treasure is inside us all along, like finding a secret hiding spot in our own. Imagine karma and reincarnation as the universe's way of helping us grow. It's like a gentle push on a swing, guiding us forward on our journey to becoming our best self. As we learn to be kinder, wiser, and more loving, we start to see the magic within ourselves. Superpower we never know. So, life is like a big road trip, and mission is understanding ourselves better. It's a journey full of surprises and discoveries, and every step brings us closer to finding our own inner light. When life throws difficulties in our way, we search we search for happiness everywhere outside. And when we don't find it anywhere outside, after putting so much efforts to find it in temples and even some so-called Mahatmas, all these are the ways of the nature. So even some Mahatmas, we finally turn inward. Don't you think the law of karma, reincarnation, all these are the ways of nature to the divine seed to guide it in its journey towards the supreme consciousness? It's how the soul works. When we are in control of our lower self, we can't realize that we have the divine power within us. But the soul finds its destination. It's the longest journey towards the nearest destination. The seed needs to be nurtured with love, compassion, kindness, selfless service, above all, realization. Realization of being the part of the divine. Once, an old lady was searching something in the dark at night, but she was unable to find it because of her poor eyesight. Then a young man came to her and asked, "What are you searching for?" The lady replied, "I am searching for my needle." Then the man, "Let me help you." Then he started searching for it, but he couldn't find it. Then the man again asked, "Do you remember where did you lose it?" Then the lady replied, "Yes, I lost it inside my house." Then the man laughed and said, "You lost it inside the house. Then why are you searching it outside?" The lady replied, "Because it's very dark, right? I found some light here, so I am searching for it here." The man then asked, "But you left it inside the house." Then the lady replied, "You are so wise. Then, instead of looking within, why are you searching for God in temples, churches, mosques, everywhere outside? Is it because it's dark inside? But if you try to look within using the light of wisdom, then you can see God within yourself." The second eternal truth is the principle which gives life, dwells in us and without us, is undone and eternally beneficent, is not heard, seen, or lived by the man who desires perception. So
To nurture the divine seed, we need to understand the divine essence within each one of us. Because how can we nurture something which we can't even see, and something which we have not realized even exists? For what we need to understand and recognize the divine spark within. We say that God is in everything, in every being. God is omnipresent. Our universal invocation says, "O hidden life, vibrant in every atom." In the start of every meeting, we invoke that, right? But have we ever realized this? In moments of confusion or moral uncertainty, there is often a subtle voice within us nudging us towards what feels right. This inner voice, some believe, originates from our soul or inner essence. It's like a quiet guide, always present, but easily overlooked in the noise of daily life. When we heed this inner voice and choose the path of goodness, it's akin to nurturing our soul. It's as if we are feeding a flickering flame within, allowing it to grow brighter and more radiant. Each time we follow its guidance, we are peeling away layers of our ego or lower nature, revealing the divine spark within us. So, recognizing the divine essence within everyone is about attuning ourselves to this inner guidance, trusting it to illuminate the way forward, and allowing it to transform our thoughts and actions for the better. It's a journey of self discovery and spiritual growth where the more we listen, the more we unveil the boundless potential within ourselves. To recognize the divine spark within, we need to be aware. Once we recognize the divine power within us, it often leads us to make choices aligned with what is considered right or ethical. This notion resonates with teachings like the Noble Eightfold Path, which outlines principles for leading a righteous life. This includes having the right beliefs, right thoughts, right speech, right actions, and right means of life. When we tap into the divine essence within, it guides us towards adopting beliefs that are compassionate and wise, thoughts that are positive and constructive, speech that is true, kind, and helpful, actions that are right, ethical, and beneficial for the mankind. By following such principles, we not only nurture our inner divine nature, but also contribute to creating a more harmonious and just world around us. It's a pathway to personal growth and collective well being, rooted in the recognition of the inherent goodness of wisdom within each of us. Knowledge provides, we need knowledge for all of this to understand and to recognize the soul. So, knowledge provides the basis of proper decision making. Without understanding the consequences and implications of our actions, we may cause harm despite having good intent. Study allows us to gain necessary knowledge and insight, making choices that align with our values and contribute positively to the well-being of humanity. In a small town, there once lived four Brahmin scholars who were also great friends. Three of the scholars were very well read, so they were very clever. But the fourth one, while lacking in knowledge, was rich in common sense. Once, one of the scholars remarked to the others, "If we go to far-away courts of great kings, our wisdom will earn us fame and fortune." The others immediately agreed. They also set out on their journey. On the way, they came across the skin and bones of a dead lion. The first scholar said excitedly,
Let's test the power of our knowledge. Let's try them and bring this dead lion back to life. I can put together its skeleton perfectly, the first scholar said. I can fill the second with flesh and skeleton with flesh and blood, boasted the second scholar. I can give life into his body so that it becomes a living creature, said the third scholar. The fourth scholar said nothing about what he could do. He resigned, shook his head, and said, very well, do as you wish, but please wait till I climb up a tree. All of you are great scholars. I trust your wisdom and knowledge. You have the power to bring a dead beast to life, and soon this lion will roar and be alive. However, I am not sure if you have the power to change the nature of a beast. A lion never eats and will never eat flesh. His scholar quickly ran towards a tree and climbed up on it as his friends laughed at him. When the third Brahmin scholar breathed life into the lion, the great beast stirred and awoke. Then, with a mighty roar, it leaps upon the three scholars and eaten them. While knowledge is important, true understanding goes beyond mere accumulation of information. Meditation and contemplation help us go into the depth of our consciousness, enabling us to gain insight into our motivations, biases, and inner workings. By fostering self-awareness and empathy, this practice leading to more compassionate and harmonious relationships. One day, one person climbed up a mountain where hermit woman was meditating. She had taken refuge and was asked, "So it's such a solitude place," to which she replied, "I have lots of work." "And how can you have so much work? I don't see anything around you here," the man asked curiously. "I have to train two dogs, control one rabbit, discipline one snake, motivate a donkey, and tame a lion," the hermit replied. "And where have they gone that I don't see them?" The man asked. "I have them all inside here within me," the lady replied. "The hawks stare on everything that is presented to me, good or bad. I have to work on them to see only good things. They are my eyes. Rabbit wants to go wherever it wants. I have to train it to be calm. It's my mind. The donkey is always tired and lazy. That is my body. The most difficult to tame is the snake. It is always ready to sting, bite, and poison anyone nearby. I have to discipline it. It's my tongue. I also have one lion. Oh, how proud he thinks that he is a king. I have to tame him, and that's my ego." So, you see, my friend, I have lots of work. With proper knowledge, understanding, and wisdom, we are better equipped to engage in selfless service. When we act from a place of wisdom and compassion, our actions are more likely to have positive impacts on the world. Service not only benefits others, but also nurtures our lower self, fostering a sense of interconnectedness and unity within humanity. So, effective decision making requires knowing when to act and when to refrain from action. Sometimes, allowing things to unfold naturally without intervention is the wisest course of action, while other times taking decisive action is necessary to address pressing issues. Balancing action and non-action requires discernment, intuition, and an understanding of the underlying principles of God that govern the universe. By recognizing the divinity within oneself and all beings, can nurture a sense of reverence, compassion, and respect for all forms of life and realize the oneness of all. And self-realization is the ultimate goal of human existence.
Nurturing the divine seed involves recognizing and awakening through spiritual practices, self-reflection, and inner growth. Nurturing the divine seed within is a journey of self-discovery and spiritual awakening. It's like we are nurturing ourselves. It is a testament to the interconnectedness of all beings, a recognition of our inherent unity with the cosmos. As we cultivate a nurturing environment filled with love, compassion, kindness, we become vessels of divine, guiding each other towards wholeness and fulfillment. And each step bringing us closer to the realization of our true nature. There is a quote, I love that, says, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. When we help others, we are not just helping them. We are also helping ourselves grow that divine spark inside. It is said that soon after his enlightenment, the Buddha, the road, who was struck by the extraordinary radiance, the man stopped and asked, my friend, what are you? Are you a special being or a god? No, said the Buddha. Well then, are you some sort of magician or wizard? Again the Buddha answered, no. Are you a man? Well, my friend, what are you then? Then Buddha replied, I'm awake. The divine and dormant stage now. We have to nurture it by realizing its presence and by giving it the suitable environment to awaken. Thank you so much. Thank you for giving me the opportunity. आज स्मिता प्रज्ञा, आपका बहुत ही टाइम से खत्म हुआ। वरुण जी, आपका स्वागत है। कन्नड़ा में आपका दूसरा भाग प्रस्तुत करें। तो ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಪೋಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ನಾವು ಕೊಡುವ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಇರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಇರುವ ಜ್ಞಾನ, ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡಿಪಾಯ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೋಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಥಿಯೋಸಫಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಹೋದರತ್ವ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರೇಯರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್, ಪ್ರತಿ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುಪ್ತ ಚೇತನದ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಸಹೋದರತ್ವ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದನ್ನಾಗಿ ನೋಡು. ನೀನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ, ನೀನು ಬೇರೆ, ನಾನ್ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನೋ, ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗದು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಥಿಯೋಸಫಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೂಲಭೂತ, ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೈತಿಕತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೈತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮತಗಳಿದೆ, ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸಹೋದರತ್ವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಥಿಯೋಸಫಿ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಲ್ದಿರ
ಸೈಂಟಿಫಿಕ್, ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಹೋದರತ್ವ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈತಿಕವಾದ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೈತಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ನೈತಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಿಪಾಯ, ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸೊ ಆ ನೈತಿಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇರಬೇಕು, ನೈತಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ಸಹೋದರತ್ವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಡಿಪಾಯ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು, ಆಗ್ಲೇ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾನವನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನೈತಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಬೇಕು ಮೊದಲು, SMS ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ನೈತಿಕವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅದು 3 ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಅಧ್ಯಾಯ, ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಆ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಇದೇ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೊದಲನೇ ಗುಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಒಂದು ಚೂರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದೇ ಸತ್ಯ ಇದೇ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕಲಿಯುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಾಗ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅದನ್ನ ಅರಿಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರ್ಮ ನಿಯಮದ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ಮಿತಾಪ್ರಜ್ಞ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ 4 ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಒಬ್ಬ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಯಾಕೆ ನಾವು 4 ಜನ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೊರಟಾಗ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ 3 ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸಿಂಹವನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬದುಕಿಸೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತಂದು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಈ ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ 3ನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೀವ ತುಂಬುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ 4ನೇವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ ನಿಮ್ 3 ಜನ ಇಷ್ಟ, ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ, ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಏನೋ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೀವ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಣ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಆ ಗುಣ ಅನ್ನೋದೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ, ಅದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಂಸಾಹಾರಕ್ಕೆ. ಅದು ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅಶ್ವಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಅದು ಅದರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗುಣ, ಅದರ ಗುಣ, ಅದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಬೇರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಜೀವ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ
ಬದುಕುತ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಮರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ 3 ಜನ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ 4ನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅವ್ರ 3 ಜನನ್ನ ತಿಂದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಸಹೋದರತ್ವ ಅಥವಾ ಈ ನೈತಿಕತೆ ಅನ್ನೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನಾವ್ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಪೋಷಣೆಗೆ, ಅದು ಈ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಹೋದರತ್ವ ಅಥವಾ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಗುಣ, ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಿಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರದೆಗಳು. ನಮಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು, ನಾವು ತಿಳಿದಿರೋದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವೋ, ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯುವಿಕೆ, ಹೊಸದನ್ನ ಕಲಿಯುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ನಿಂತೋಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜ್ಞಾನ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ, ಇದರ ಆಧಾರಿತದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ ಯಾವ್ದು ನಿಜ ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತೀವೋ, ಅದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಪೋಷಣೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಾದ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಮರೈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಪಾಲನೆ ನಾವು 5, 10, 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೇವೆ ಅಂತ SMS ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು, ಸೇವೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 2ರ ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಥಿಯೋಸಫಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆಗೆ ತರಬೇಕು. ಇದು ತಂದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. थैंक यू वरुण जी, अभी समय पे आपने खत्म किया। थैंक यू सो मच। स्वस्तिशिखा जी, आपका स्वागत है। आपका पार्ट 2 हिंदी में आप करें। थैंक यू। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने छोड़ा था इंसान के पास फ्री विल है, अपनी इच्छा शक्ति है, उसकी वजह से वो जो चाहे वो कर सकता है। मतलब चाहे तो अपने आप को बहुत अच्छा बना सकता है, आगे आध्यात्मिक ज्ञान या इसके साथ वो आगे जा सकता है। तो हमारा जो भी डेवलपमेंट है, हमारा जो भी अच्छाई के रास्ते में चलना है, ये टोटली हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। हम कितना अपने आप से सीखते हैं, कितना अपने आप को जानते हैं और कितना अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, और कैसे हम वो जो अनुभूति है अपने आप को जानना या हमसे कुछ भूल हुई है उसको सुधारना, या इसको लेके हम कितना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको छोड़ के हम कितना आगे जा सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। इसके आगे जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, कभी कभी हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हम लोगों को कुछ मेंटल इश्यूज रहता है, कोई सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम हुआ, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर हमारे शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो हमसे कुछ और गलतियां हो रही है, तो इसके लिए हम लोग अपने किसी और को दोष देते हैं। तो ये यहाँ पे जब हमको समझ में आएगा ये हमारा प्रारब्ध है, और इसको
ये एक्सपीरियंस लेने के लिए या सोल की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए हमको बार बार री इंकारनेशन या पुनर्जन्म लेना पड़ता है, हमको बार बार आना पड़ता है और एक्सपीरियंस लेके सीख के, यहाँ से सीख लेके अनुभूति के साथ फिर हम आगे जाते हैं। जब ये हमको समझ में आएगा तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं या हम कुछ यहाँ से सीख रहे हैं, ये हमारा पढ़ाई का ज्ञान है, लेकिन इसको हम लोग कितना काम में लाते हैं, प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर क्या बोलते हैं, जब भी हमको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है या थोड़ा थोड़ा हमको ज्ञान मिलता है, हम फिर ढूंढने लग जाते हैं। हम किसको ढूंढते हैं? हम बोलते हैं मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ रही हूँ, या मैं इनर सेल्फ को, अपने आप को ढूंढ रही हूँ। तो हम कहाँ ढूंढते हैं? बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं। जबकि हमने सब ऐसा सुना है, सबको ये पता है कि हमारे अंदर है। हम जिसको बाहर इतना ढूंढते हैं वो हमारे सबसे करीब है, लेकिन हम बहुत दूर ढूंढते रहते हैं। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा और ये समझने के बाद हमको धीरे धीरे अगर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर ये हमको एक्सपीरियंस में हमको एक होता है ज्ञान, होता है जो थियोरिटिकल नॉलेज है, और एक प्रैक्टिकल होता है हमारा वास्तव ज्ञान में। ये जिसको हम लोग विजडम बोलते हैं, इसमें ये परिवर्तित हो जाएगा और हमारा जो सोल है, तो सोल का जर्नी फिर आगे बढ़ सकता है, हम लोग आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है हमारा डिवाइन जो पावर है, जो दैवी शक्ति है, जो दैवी शक्ति संपन्न जो हम है, ये क्वालिटीज को हमको रियलाइज करने के लिए व समझ अथवा समझने के लिए हमको अपना जो लोअर सेल्फ हम बोलते हैं, लोअर सेल्फ को कंट्रोल करना है, संभालना है, उनको सही रास्ते पे लेके चलना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगी कि जैसे हम तो सुनते हैं कि लोअर सेल्फ को कंट्रोल करना है, आगे लेके जाना है, समझना है, लेकिन जब प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है, तो हम लोग रुक जाते हैं, हम लोग बह जाते हैं वो प्रॉब्लम्स के साथ, वो मुसीबत के साथ हम बह जाते हैं और हम सब भूल जाते हैं। अच्छा, मोस्टली सबके साथ होता है ये सब। तो यहाँ पे हम ऐसे सोच सकते हैं अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए या अपने अंदर वो नेगेटिविटी को कम करने के लिए, हम लोग वहां पे जहाँ जब भी दैनिक डेली लाइफ में हमारा जब भी ये प्रॉब्लम्स आता है कुछ, हम ऐसा कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स मतलब मैं बोल रही हूँ, जो हमारा माइंड के लेवल पे या शरीर के लेवल पे या इमोशन के लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आता है, तो उसको हम सोच सकते हैं। लाइक जैसे क्या होता है, मान लीजिए आज सुबह मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, तो मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करते 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 कल तक लेके गई। तो ये जो मैं सोच सोच के रात को प्रॉब्लम्स को सो गई, तो रात में वो मेरे अनकॉन्शियस लेवल पे चला गया। तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा काम कर सकते हैं डेली बेसिस पे, कि यहाँ पे रुक के वो प्रॉब्लम्स को निकाल के फिर उसके जगह पे कुछ सोल्यूशंस लेके फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी ये हमारा लोअर लेवल्स को हम लोग जो हमारा है मन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आगे हम चलते हैं तो अंडरस्टैंड रिकॉग्नाइज द डिवाइन स्पार्क। हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर जो परमात्मा का जो अंश है, इसको समझना है। इसको खाली मतलब ऐसा पढ़ना नहीं है, इसको रुद्बत करना है या इसको रियलाइज करना है कि ये क्या है, और इसको मतलब अपने आप में उसको समझना, ये बहुत बड़ी बात है। जो हमारे अंदर का जो आवाज है, जो एसेंस है, जो मूल्य है, उसको समझना और उसके हिसाब से, जैसे हम लोग हमेशा हमारे अंदर की जो आवाज आती है जब हम कुछ गलत करने जाते हैं, जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तभी हमारे सबके अंदर से एक आवाज आती है कि ये नहीं करना है, ये करना है करके, लेकिन हम लोग उसको अनदेखा कर देते हैं, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं, बोलते हैं हाँ ये नहीं हो, अच्छा उसको अनदेखा कर लेते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए, तभी जाके हम वो सत्ता को समझ पाएंगे, उधर भी शक्ति संपन्न जो हम है, हम अपने आप को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे और एक बताया गया है कि नैतिकता के साथ अपना जिंदगी का निर्वाह करना, कि कैसे हम लोग, जैसे हमारा नोबल एट फोल्ड पाथ था, बुद्धा ने सिखाया था
कैसे हमारा विचार सही होना चाहिए, बात करना सही होना चाहिए, काम सही होना चाहिए, जिंदगी हमारा जो जीविका है वो भी सही होना चाहिए। ये सब हम लोगों को ध्यान रख के उसके साथ चलना है। फिर उसके बाद आता है ये स्टडी, मेडिटेशन एंड सर्विस, जो सबसे बहुत गुरुत्व दिया गया है, इसको बहुत ही जरूरी है। कैसे पढ़ाई करेंगे, पहले हमको नॉलेज की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान रहता है तो हम कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए और कुछ करने के लिए पहले हमारे पास उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हमारे पास खाली ज्ञान नहीं, वो ज्ञान के साथ हमारा व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी था। एक छोटे से गांव में, जैसे शहर में रहते थे, 4 ब्राह्मण पंडित रहते थे, जिनमें से 3 लोग तो जो थियोरिटिकल ज्ञान था उसमें बहुत प्रवीण थे। लेकिन जो चौथा वाला इंसान था, चौथा वाला जब पंडित था, उसको थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान था। तो जब तीनों ने एक बार अपने आप में विचार करने लगे कि एक शेर को देख के, मरा हुआ शेर को देख के वो लोग विचार करने लगे कि इसको जिंदा कैसे कर सकते हैं। तो तीनों ने अपना अपना विचार रखा। किसी ने बोला मैं उसको इसका स्केलेटन में मांस रख जो है वो ले लूंगा। किसी ने बोला वो स्केलेटन को मैं इकट्ठा कर लूंगा तो दैट उसकी बॉडी की फॉर्म बन जाएगी। तो किसी ने बोला मैं उसमें जान दे दूंगा, जान डाल दूंगा। तो ये सब सोचते सोचते जब सोच रहे, डिस्कशन कर रहे, तो चौथा आदमी ने बोला थोड़ा सा रुक जाओ, आपका जो नॉलेज है उसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ये कर दोगे। लेकिन उसके बाद जब उसका जो रिएक्शन रहेगा, भूखा शेर का जो रिएक्शन रहेगा, तो उससे आप लोग नहीं बच पाओगे। मतलब वो खा सकता है। ये सोच के उसने पेड़ पे चढ़ गया और बाकी तीनों का हालत वो शेर के सामने उनके जान चली गई। तो इसके साथ मतलब हमको ये कंक्लूजन मिलता है, हम लोग ये कर सोच सकते हैं कि ज्ञान होना और ज्ञान का रियल ज्ञान होना और उसको जिंदगी में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन, कि हम लोग जो ज्ञान लेते हैं या फिर हमारा डेली हम जो भी करते हैं, हम अपने आप को इंक्वायरी करना है, अपने आप को पूछना है या फिर क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपने से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है अपने खुद के साथ और सोचना है, अपने बारे में सोचना है, खुद के बारे में, मतलब जो काम हो रहा है वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, कहाँ पे गलती हुई, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं। और और अगर वो जो हम सोचते हैं और अगर नेक्स्ट डे हम लोग उस पे चेंजेस ले आते हैं, हम अगर सही काम कर लेते हैं, तो ये हमारा मेडिटेशन हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि हम एक जाके शांति से बैठ के 1-2 घंटा आंखें बंद करके बस सोचते रहें, फिर जो काम करते हैं उसमें कुछ हार्मोनी नहीं है, ऐसा नहीं है। हम पहले सोचते हैं हम क्या किए हैं, नहीं किए हैं, और जो गलत किए हैं, अगर हम अगले दिन, सपोज मान लीजिए कि मैंने आज किसी पे गुस्सा किया, अगर मुझे रियलाइज हुआ कि गुस्सा करना गलत है, तो अगर कल को मैं वो कम करती हूँ या नहीं करती हूँ, दो ही ऑप्शन रहता है। ऐसा हम तो एक दिन में नहीं बोल सकते पूरा जीरो हो जाएगा। अगर मैं कम करती हूँ तो भी वो ही मेरे लिए मेडिटेशन है। मैं अपने आप को जो सुधार रही हूँ वो भी एक काइंड ऑफ प्रिपरेशन है, अपना सीड का अवेकनिंग या अनफोल्डमेंट के लिए। हमारे अंदर जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य शक्ति है, उसको अनफोल्ड करने का ये भी एक माध्यम है। तो इसको एक स्टोरी के हिसाब से समझाया गया है। एक लेडी थी जिन्होंने एक माउंटेन पे जाके मेडिटेशन कर रही थी, पहाड़ पे जाके वो मेडिटेशन कर रही थी। तो करते करते एक आदमी ने उनको देखा और तो उसने बोला कि आप यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बताया मेरे पास बहुत काम है करने को। तो वो इधर उधर देखा, उसको कुछ दिखा नहीं। तो फिर उसने पूछा क्या काम है आपको, मेरे को तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो फिर वो बोली मेरे पास 2 बाज है जिसको मुझे ट्रेन करना है, और एक खरगोश है, और एक डिसिप्लिन सिखाने के लिए एक सांप है, और एक गधा है मेरे पास, और एक शेर है जिसको मुझे टेम करना है। ये तो उसको तो कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे वहां पे कोई फिजिकली तो था ही नहीं। फिर वो बोलने लगी कि नहीं नहीं, ये सब बाहर नहीं है, ये सब मेरे अंदर ही है। जैसे ये जो बाज है, ये दोनों मेरी आंखें हैं, ये दोनों मेरे को क्या सही और खराब दिखाती है।
तो मुझे उसमें से ये विचार करना है, मुझे सही देखना है या गलत देखना है। हम अगर इसके बारे में गौर करेंगे तो हर दिन हमारे पास इतनी सारी न्यूज होती है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है। आप अगर कोई भी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करेंगे या न्यूज़पेपर में देखेंगे या टीवी पे देखेंगे, हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है और बहुत खराब भी है, अच्छा भी है, और हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या देखते हैं। और जो खरगोश के बारे में बोला गया है वो हमारा माइंड है। जैसे खरगोश भागता रहता है, हमारा माइंड भी वैसे ही भागता रहता है। तो उसको शांत करना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है। हम उसको शांत करने जाते हैं तो फिर दूसरा कोई थॉट आ जाता है, कोई और चिंता आ जाता है उसके, वो चिंता में हम सोचते हैं तो कोई दूसरे चिंता में फिर कोई और कोई आता है थॉट, उसमें हम लोग खो जाते हैं। तो इतने हम खो जाते हैं फिर हमको समझ में नहीं आता हम कहाँ से शुरू किए थे। तो इसको भी ट्रेन करना या इसको भी शांत करवाना बहुत जरूरी है। फिर एक है गधा, जो है हमारा शरीर। इसको हमेशा टायर्ड लगता है, मतलब हमेशा हम लोग थक जाते हैं, हमेशा हम लोगों को ऐसा फील होता है कि कुछ फील होता है। तो इसको भी ट्रेन करना है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, मतलब जैसे कि हम लोग सब बोलते हैं मेरे को प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन कितना करते हैं, कितना कहाँ तक कर पाते हैं, वो भी हमारे ऊपर ही है। फिर आता है सबसे जो डिफिकल्ट है, वो है सांप। तो सांप का क्या है, वो कहीं पे भी अपना जो विष है, वो जो पॉइजन है, वो कहीं पे भी फेंकता है और कहीं पे भी काटता है। तो उसको है, वो है हमारा जीव और जीवा जिसको हम बोलते हैं। तो उसको भी डिसिप्लिन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कुछ भी किसी को बोल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो हमको पता नहीं चलता, बाद में जब रियलाइज होता है तो बहुत लेट हो जाता है। फिर एक है शेर। शेर क्या है, शेर अपने आप को समझता है कि मैं मतलब सबसे बड़ा हूँ, सबसे, जैसे जंगल का राजा हूँ। जैसे शेर सोचतो है ना, जंगल का राजा है, तो वो सोचता है कि मैं सबसे बड़ा बड़ा हूँ, और वो घमंड करने लगता है इस बात को। तो वो हमारा ईगो है, और उसको टेम करना या फिर उसको कंट्रोल में लाना, उसको कम करना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी काम है। तो अ, ये बहुत सारा काम है जो हम लोगों को करना है। तो फिर इसके कंक्लूजन में हम लोग आते हैं। तो सबसे बड़ा बोला गया है कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड रियलाइजिंग द यूनिटी ऑफ लाइफ। जो जैसे हम लोग बोले, अपने आप को ये समझ में आना या अपने आप ये अपने खुद को समझा पाना, और कि हम एक हैं और हम वो शक्ति के या परमात्मा के साथ में हम एक हैं। ये ये हमको करना है। ये करने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं। हम खुद को जानने के लिए फिर अवेकनिंग हमारे अंदर वो जो है उसको हमको समझना पड़ेगा। उसको समझ पाएंगे तो हम अपने आप को जान पाएंगे। इसके लिए हमको अपने आप खुद की खोज खुद को करनी पड़ेगी, और खुद के ऊपर खुद की खोज, खुद की साधना करनी पड़ेगी। हमारी जो इनर ग्रोथ है, इसको करने के लिए, डेवलप करने के लिए, तभी जाके हमारे अंदर जो सीड है, जो बीज है, जो दैवी शक्ति संपन्न है, जिसके अंदर वो सब शक्तियां हैं जो भगवान में हम लोग मानते हैं, और भगवान के अंदर जो है वो सब हमारे अंदर है, तभी हमको वो समझ में आएगा। अभी भी है, कभी भी था और आगे भी रहेगा, लेकिन ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हमको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि हम इतने शक्ति संपन्न हैं। तभी हमको समझ में आएगा, और वो छोटा से सीड से, छोटे से बीज से हम कभी बड़ा वाला पेड़ बन जाएंगे। हमको खुद को पता नहीं चलेगा, ना कि किसी और को पता चलेगा, लेकिन हम वो बड़ा पेड़ बनते बनते बाकी लोगों का भी हम हेल्प करते जाएंगे, और इसमें खाली हमारा नहीं, सबका हम भला कर जाएंगे। वो हमको खुद को तभी समझ में भी नहीं आएगा मैंने ऐसा कर दिया है, लेकिन वो हम नहीं, हमारे अंदर का जो दैवी शक्ति है वो कर रहा है। थैंक यू। वेरी मच स्वस्ति शिखा जी। अभी प्लेटफॉर्म खुला है, तीनों वक्ताओं को कुछ और कहना हो तो प्लीज आप माइक ओपन करें और बताएं। उसके पहले मैं स्मिता प्रज्ञा जी को खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी गहरी बात इतने ठहराव से और इतनी कहानियों से समझाई, जो हमें समझने में, मुझे तो स्पेशली बहुत ही आसान लगा। वरुण जी ने कन्नड़ा में बताया, मगर इतना वो आर्टिकुलेट और एफर्टलेस और एनिमेटेड टॉक था कि मुझे लगा नहीं कि मैं कन्नड़ा नहीं जानती हूँ।
और स्वस्थ शिखा जी, आपका जो इनोसेंस और जो सहजता और सिंपलिसिटी से आप बोलती हैं, बहुत ही हमारे गुजराती से सुपाच्य हो जाते हैं, इजीली एसिमिलेटेड ट्रुथ which can be easily digested. So the platform is open. Anybody has any questions or any queries or want to add apart from these three speakers? I would request speakers, if they want to add anything, then the mic is open for all. Anybody? The speakers? Do you want to add? नहीं है तो किसी और को कोई ये मेरी आज एक लिमिटेशन है कि मैं छोटे लैपटॉप में हूँ, तरल के वो बड़े होते हैं, तो जो वीडियो ऑन करेगा वही मैं देख पाऊंगी, उनको मैं हाईलाइट नहीं कर पाऊंगी। तो काइंडली जिन्होंने जी जितेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Yes, I wanted to say something. I'm not very aware. Anyway, first of all, thank you, all three of you, Smita, Swasi, and Varun. Well done. Whatever you have said is very, very good. But in your all three of your speech, where you mentioned Paramatma, God, or Bhagwan, or Ishwar, or Deva, I'm not very comfortable with that one. The reason is the Dvait philosophy comes in, because we are ourselves, Bhagwan, Ishwar, Deva, ourselves, real selves. In theory, we know it, that we are not, like we are lower self. So nurturing the lower self means, but at least we should know something in theory. There is a Advait theory, which is oneness. So that and I are one. That's where I just want to. I just want to say that I'm not very comfortable. But otherwise, everything is fine. Also, I would like to recommend people, especially Indian members, Theosophical Society members, like Smita and Swasi. I don't know if you have read the books, particularly a few books that I have entitled them, a Master's Letters to Epicinet, which is done by the Vic Hao Chin. If you follow his edition, which was done by him from Philippines, especially the letter number 30, very, very important to read that letter number 30 and the letter number 88. Then all other letters are obviously Master's Letters to Epicinet means Master's Letters to Smita, Master's Letters to Swasi, and so forth. Because when you read this letter, think that you are there, the Masters have written to you, and read that way. Then you will understand the book very well. That's my first recommendation of that book. Because we don't have a scripture like the Christians have the Bible, Islam has got the Quran, and so forth. We don't have any scriptures as such. One, so we have to read a lot of books. Another one is A Secret Doctrine, Self-Culture by I.K. Taimini, Divine Plan, At the Feet of the Master, or Vivek Chundamani, Light on the Path, Voice of the Silence, Masters and the Path by C.W. Leadbeater, In the Outer Court by Annie Besant, and many other 250 plus books produced by TPH. So, I mean, as rightly mentioned by all three speakers, that the nurturing the seed is a lower self. The lower self is physical body, astral body, and mental body. So that's what we are not. But we are one with that energy, supreme energy, whatever it is. So this is what I'm saying. We must connect it. And that's where the plant should be. So the seed should become that plant, which is the supreme energy, and so forth. So we are evolving. That is what nurturing means. So we have to evolve from the lower self to the higher self. The Theosophical Society logo, I don't know if you have anybody heard about it. The Master Kutumi says that if you can understand the logo properly, you can be self-realized. It's a fantastic statement.
that if you can understand the logo completely, then you can even become self-realized. Because the upper triangle, that is ourselves, the lower triangle pointing downwards is the lower self, which is the physical body and so forth. And we are not the body. We are powerful beyond measure. We are more radiant than the sun. We are more pure than the snow. We are more subtler than the ether. We are boundless, eternal, immutable, naturally glorious beings. So don't underestimate yourself. You are powerful. So that's all I want to say now. Especially those people who have joined, those who are below 45 and under, for them, this is what I would share my readings, my understanding, my experience, and so forth. Thank you. Thank you, Jitendra ji, for your real input with, of course, little homework given to the young theosophist and us too. Thanks a lot. Harshvardhan bhai, do you want to say? आपको कुछ कहेंगे? Yes. Now, really, the most wonderful time. This is when we meet in Triveni program, and today it is really a remarkable matter that these three young people, young students of theosophy, have joined, and especially SMITAPRAGYAN in English. Am I pronouncing the correct name? SMITAPRAGYAN. And Yes, SMITAPRAGYAN. Yes. Yes, SMITAPRAGYAN. Okay, because that is the name itself shows a kind of significant value, no? And SWASISHIKHA in Hindi and VARUN in Kannada. Kannada is really a fantastic language. No, today I understood certain things in Kannada. Of course, I am not used to listening to Kannada. So really, the topic is very wonderful. It is the topic which we have to have in our daily routine life to read at least more than 20 to 30 pages. This should be our homework. 20 to 30 pages means together 15 pages should be there. When we count one side, is that the two side pages? So 30 pages should be read. And secondly, what just Jitendra ji just told about the logo and other matters, we have to have the understanding of our own self, because our self, that is highly connected with the supreme being, and when we get angry, when we become jealous of something or somebody, when we have the prejudices, we come down immediately. We are disconnected from that supreme being. So again we are with our ego. So that we have to understand at which point or at what kind of fragment of time was there, at what relations were there that we had this idea or prejudice or a struggle. So mentally we have to be ready. And this readiness is our awareness, all-time awareness. We are aware, but when we speak something, we don't understand the meaning and it becomes a kind of adverse matter. So first we read better, we go on reading, accumulating, comprehending, and with the proper relationship of understanding, we can clear certain things in our mind, because mind is the only matter that makes either hell to heaven or heaven to hell. So in this way, we have to understand our mind first. If it is a wavering mind, we cannot have the sadhana, the dharana. So our wavering mind should be controlled. So that is what in the culture, self-culture, in the thought power of Dr. Besant's books, this is all explained very well. So we have to have the understanding of our thoughts. Then comes the proper understanding with the eightfold paths that you delineated very nicely. I like that because it is also the subject that we have to keep in mind. Third thing is very important. That is our intuitive knowledge. Whosoever speaks, to whomsoever we listen to,
whosoever gives us the references, all these are very outward things that we have to have a kind of practice to listen, to comprehend, and again, figuratively, we have to add to our own achievements. But unless there is the intuitive knowledge, it is all sometimes useless. So why should it become useless? Let us think over that. Our understanding should be so wide in the sense that we can have the intuitive force. Intuitive force comes only after certain practice. Practice of meditation, practice of thinking on one pointedness, practice of writing certain things in a very repeated way, and going through these different matters which are very hard to understand, just like secret doctrine. People used to say, this book is very hard. No, 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 don't do that. You go on reading 1 or 2 pages, and those hard things would be very easy. They would become easier because all those examples are there. As a theosophist, we must have this confidence that we are not reading anything first time. This is our second time reading, third time reading, fourth time reading. From last birth to that, again the previous births, whatever we had done, that is a kind of legacy that we are having in this birth, in this life. So this is the hierarchical order. What the masters, that letters to Epicynet, what Jitendra ji just mentioned about that letter number 30. So in this way, we are connected with that hierarchical order, and in that way we can have the power of that supreme being. Supreme being is not outside. That we have not to find in the temples, or we have not to find in any other place or tirth or any other riverside or whatever we can have. But it is in the heart of one's own individual way. So we have to be individual in that way. We don't bother about anything. If we are individual, we can go through all those things which are really important. And today, really, I congratulate you again, because it is not the time for me to go more deeper into this matter. But really, I appreciate, I find it is not the wastage of time. It is the time that we listen to you in 3 languages. And really, it is our concentration that we just listen to you. That is more important, and we encourage you. And we are encouraged more, we are inspired. I really, I congratulate you with all my blessings to you, and you go on further doing your work in the Theosophical Society, do more activities, be more comfortable, don't have any grudges for anything that you can't do. So that is the way to success as a being a theosophist. Really, I feel very, very proud of you. Thank you very much. Thank you so much, Harshvardhan Bhai, for your wise words. And thank you so much, everyone. किसी को और कुछ ना कहना हो तो हम समापन की ओर बढ़े. So I can say the end prayer. Mano buddhya hankar chittani naham na cha shrota jivve na cha grana netre na cha vyoma bhumi na tejo na vayu chidananda rupa shivoham shivoham न च प्राण संयो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशः न वा पाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न वा धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं
न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुव्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया लैपटॉप और मोबाइल के लिए, कुछ क्षति हुई है तो माफ कीजिएगा। और बहुत ही अच्छा लगा आज इतने पावन अवसर पर और वेरी ऑस्पिशियस डे पर इतने वायरती का पदार्पण हुआ है त्रिवेणी में। बहुत ही सभी बड़ों के आशीर्वचन से हम और आगे करते रहेंगे और यही अगर आपकी सबकी अनुमति हो या किसी को और कुछ को न करें तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके समाप्त करूँ। नमस्ते सबको, नमस्ते। बाय। Well done, Archana Ben.